is condition for maximum current from a parallel combination of cells. So we have taken the identical cells, हर एक का EMF E, internal resistance R, and these are connected in parallel. मान लीजिए ये इस तरह की N cells हैं. So we can say that their internal resistances are also connected in parallel. और ये पूरा कॉम्बिनेशन कनेक्ट है एक्सटर्नल रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R. अब इन दोनों ये जो दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर सारे सेल्स इन दो सिमिलर पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो नेट ईएमएफ है वो भी E ही होगा जो एक सिंगल सेल का है. तो टोटल ईएमएफ विल बी E. And total internal resistance, because these are in parallel, so we can write 1 upon R dash equal to 1 upon R, 1 upon R, and N times. So it will become N upon R. R dash will be equal to R upon N. From here we can get the total resistance. So total resistance will be equal to R plus R upon N. So we can write the expression for total current, total EMF, that is E, total resistance, that is R upon N. From here two situations arise. The first situation, if we take first situation, so what is the first situation? That R is much smaller than, external resistance is much smaller than the total internal resistance. In that case, this can be written as, this can be neglected, so it can be written as R upon N. So current will be equal to E upon R upon N, that is N E upon R. And this E upon R is the current due to the single cell. It means we will be getting N times the current due to the single cell. तो ये एक फेवरेबल सिचुएशन है जहाँ पे N टाइम्स करंट मिलेगी एक सेल से जितना करंट मिलती है उसकी. अब दूसरी कंडीशन से अगर हम देखें कि R is much greater than R upon N. In that case, it can be written as, this one can be written as only R, because R upon N will be neglected. So in that case we will be getting E upon R, and that is the current due to the single cell. So it is not the favorable condition. So we can say कि हमें अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं और वो पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें मैक्सिमम करंट मिलेगी अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफ़ी कम है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के.